Welcome to Gyandhara People Teacher Online Study Point, and today we are going to study a new topic, micro teaching, जिसे हिंदी में आप लोग कहते हो सूक्ष्म शिक्षण। आई होप आपको क्लास में अभी स्टार्ट कर दिया होगा, नहीं तो जल्दी करेंगे। सो देर आर फ्यू हाइलाइट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग। इन पॉइंट से आपको एक बिल्कुल ब्रीफ नॉलेज मिल जाएगी। सो माइक्रो टीचिंग इज व्हाट इट इज लिमिटेड प्रैक्टिस session, limited study in practice sessions. It is for pupil teachers it helps in cultivation of teaching skills one at a time. It is only for 5 to 7 minutes, and that's why it's called micro teaching. Now, first of all, we have to know what is the history of micro teaching. So, it is invented by W. Allen in Stanford University, and now it has been using by every training college. And in India, Parsi and Shah in 1974 first published about micro teaching in India. It is very famous in all the training colleges. It is a kind of process or a laboratory technique in which people teachers practice their teaching without undermining any boy, and this technique is capable of meeting all the conditions in the laboratory. So there are lots of people who have been doing work in micro teaching, and in India for the first time it is Pasi and Shah in 1974, and after that there are lots of people. Even in NCRT New Delhi, there are first Indian monograph NCRT Delhi में mini teaching. First monograph about micro teaching is given. Definitions of micro teaching. So micro teaching is a laboratory or analytical technique of teaching training through which skills are cultivated in pupil teachers. So its aim is a technique which aims to prepare टीचर candidates यानी pupil teacher to the real classroom, and it is basically allow experiment teacher behaviors in pupil. So अगर if I go for a definition, so it is called D.W. Allen, founder of micro teaching. He has given the definition that micro teaching is scaled down teaching encounter in class size and class time. Scaled down encounter means there is a teaching encounter where there is only they take one skill at a time with a small
class size of only 5 to 7, or I guess 5 to 10 students, and duration of time is only 5 to 6 minutes. And that is why it is written that it is scaled down teaching encounter in small classes. There are lots of many definitions given in different kinds of books, or from Google you can search and add it on. uh, you can add them on in your notes, but the main definition is of DWLN, which I have given you in this topic. Now, assumptions of micro teaching. So there are different kinds of assumptions of micro teaching which have been first of all, it is laboratory and analytic analytical technique for pupil teachers skill cultivation. So it is a scientific technique. Second, it believes that pattern of teachers behavior is important, yeah, is necessary for micro teaching. Feedback is important. It believes teaching is diagnostic project. Micro teaching assumes that objective supervision is important for good training. Individual differences are of pupil teachers are also important. So these are the assumptions of micro teaching, that first of all, it is a laboratory and analytical technique for the people teacher skills cultivation, and they believe that there should be certain pattern in teachers behavior. Feedback, they believe it's very important. They believe that teaching is a diagnostic project, so objective supervision is also good for training. Or let me tell you, objective supervision, it means that whatever have been done should be given in form of numbers. That is objective supervision. Individual difference of people teacher are also considered in it. Now, there are different principles of micro teaching. First principle is principle of one skill at a time. So they believe that one skill एट अ टाइम की बात ये करते हैं, एक बार में एक ही टीचिंग स्किल को कई बार प्रैक्टिस करके उसमें परफेक्शन लाया जाता है. प्रिंसिपल ऑफ लिमिटेड कंटेंट, तो लिमिटेड कंटेंट ही लिया जाता है बिकॉज देर इज स्मॉल क्लास साइज, और लिमिटेड मटेरियल से स्टार्ट करने से टीचर्स में कॉन्फिडेंस अच्छा होता है एंड द टीचर वर्क वेरी इजली. यहाँ पे टीचर आई मीन pupil teacher. Next is principle of practice. So it based on practice. It is said that practice makes the man perfect. So it helps the pupil teacher uh, in becoming better and better. Principle of experimentation. So pupil teacher and the supervisor, अभी जब मैं आपको process बताऊंगी तो you are going to see that there is one step where teacher and student both sit down and analyze the about the planning and about the and they criticize the sample teaching whatever have been done in the class. So experimentation is done in micro teaching by pupil teacher as well as the supervisor,
and they discuss different kinds of variables that can be controlled. Next is principle of immediate feedback. Just because the micro teaching lesson plans exist only for 5 to 6 minutes, so feedback is immediately provided to the pupil teacher. First of all, it has been done by video tape recorders, and when it is introduced in India, there are human supervisors, yeah, or teacher trainers have taken place for observation of the feedback, for giving the feedback. Principle of evaluation: each macro lesson plans is supervised by the supervisor, and whatever drawbacks they see in the evaluation, they are pointed out and suggestions are given for the improvement. So there is continuation evaluation of the pupil teacher. Next is principle of continuity. So they believe that the pupil teacher is learning only one skill at a time in micro teaching, and it will continue that till he has mastered the skill. So for each skill, principle of continuity works. Next is principle of individualized training. So each trainee is given training very thoroughly, because I told you that they assume that individual differences must be there in different kinds of people teachers. So individualized training is given much focus. Now this is the process of micro teaching. First is introductory step. This is the role of teacher trainer, and this is the work of pupil teacher. फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेशन में द टीचर ट्रेनर विल इंट्रोड्यूस व्हाट माइक्रो टीचिंग इज. यहाँ पे वो माइक्रो टीचिंग के बारे में बताते हैं, जो इंट्रोडक्टरी स्टेप होता है. एंड इन द सेकेंड स्टेप, टीचिंग स्किल्स, पहले माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया जाता है, इसके बाद डिफरेंट टीचिंग स्किल्स के बारे में बताया जाता है, और उसके पीछे का जो भी साइकोलॉजिकल रीजन होता है, दैट इज ऑल्सो बीइंग एक्सप्लेन टू द पीपल टीचर्स. इसके बाद टीचर खुद एक सैम्पल लेसन प्लान, टीचर ट्रेनर जो होता है वो एक सैम्पल लेसन प्लान प्रिपेयर करता है स्टूडेंट टीचर के सामने, पीपल टीचर के सामने. एंड इसके बाद टीचर ट्रेनर प्लस पीपल टीचर दोनों मिलकर इसका क्रिटिसिज्म करते हैं, उसको चेक करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, और उसकी आउटकमिंग्स और फीचर्स के बारे में बात करते हैं. इसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि द पीपल टीचर का रोल स्टार्ट होता है यहाँ पे. इसके बाद इस प्रोसेस के बाद यहाँ पे अब पीपल टीचर अपना एक माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान प्रिपेयर करता है, उसको क्लासरूम में पढ़ाता है. फिर यहाँ पे टीचर ट्रेनर प्लस पीपल टीचर इसको डिस्कस करते हैं. उसके बाद जो भी शॉर्टकमिंग्स होती है उसे दूर करने के बाद देयर इज रिक्रिएशन ऑफ लेसन प्लान. अगेन पीपल टीचर विल टीच एंड रिक्रिटिकल सेशन विल बी डन, एंड इन लास्ट अगेन इसी तरीके से इंडिविजुअली ट्रेनिंग दी जाती है. ये एक प्रोसेस होता है. द प्रोसेस कंटिन्यूज. ये प्रोसेस तब तक चलता है जब तक एक स्किल में पीपल टीचर मास्टर नहीं कर लेता ना. देर इज नेक्स्ट द माइक्रो टीचिंग साइकिल. इसमें क्या, इसमें वही चीज़ है, एक डायग्राम के थ्रू ये साइकिल बनाई गई है. इसमें यही लिखा हुआ है कि सबसे पहले लेसन प्लान फॉर्म होता है, उसकी टीचिंग की जाती है, उसका फीडबैक दिया जाता है, फिर उसको रीप्लान करते हैं, रीटीचिंग करते हैं, और फिर उसका फीडबैक लिया जाता है. सो ये एक माइक्रो टीचिंग का प्रोसेस है जिसमें टीचिंग स्किल्स के बारे में पहले डिटेल में बताकर उसको डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है, एंड देन पीपल टीचर को कहा जाता है कि आप टीचिंग स्किल के ऊपर, केवल एक स्किल के ऊपर प्लानिंग करिए, और एक सेम लेसन को दूसरे स्टूडेंट्स को अपनी क्लास में पढ़ाइए, और फिर उसको डिस्कस करिए. तो ये अलग अलग टाइम पे दिया गया, जैसे कि इसी टेक्निक का ये जो साइकिल है, जब स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ये स्टेप्स की बात की गई, तो वहाँ पे यहाँ पे हर स्टेप की 5, जैसे इन्होंने इवैल्यूएशन स्टेप को कहा, प्लानिंग के लिए उन्होंने कहा 5 मिनट्स, टीचिंग के लिए उन्होंने कहा
5 मिनट्स। इवेल्युएशन के लिए इन्होंने 10 मिनट्स दिए, री लेसन प्लानिंग के लिए 15 मिनट्स दिए, री टीचिंग के लिए अगेन 5 मिनट्स दिए और फिर लेसन प्लान के लिए 10 मिनट्स दिए। तो इस तरीके से इन्होंने टाइम डिवाइड किया। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में डिफरेंट डिफरेंट लोगों ने अलग अलग टाइम दिया। अगर हम इंडियन मॉडल ऑफ टीचिंग की बात करें तो उन्होंने 6-6 मिनट का टाइम दिया। उन्होंने टीचिंग को 6 मिनट दिए, फीडबैक के लिए उन्होंने 6 मिनट दिए, फिर दोबारा लेसन प्लान बनाने के लिए उन्होंने 12 मिनट दिए, इसके बाद फिर से रीटीचिंग करने के लिए उन्होंने 6 मिनट का टाइम दिया और फिर से फीडबैक के लिए 6 मिनट्स का टाइम दिया। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में माइक्रो टीचिंग लगभग 45 मिनट्स की रही और इंडियन मॉडल के हिसाब से इन्होंने 6 6 मिनट्स की बात करी तो 6 + 6 + 6 12 + 6 इस तरह 5 ये स्टेप जो थे टोटल 36 मिनट की टीचिंग की बात करी गई। तो इट वेरीज इन डिफरेंट मॉडल्स इन डिफरेंट कल्चर और यूनिवर्सिटी यू कैन से। एंड ये एनसीईआरटी ने जो 6-6 मिनट का काम दिया ये एनसीईआरटी ने दिया। उन्होंने कुछ चीज़ें और भी चेंज की, जैसे डिस्कशन मेथड यूज़ करा, सीसीटीवी, क्योंकि विदेशों में क्या था कि माइक्रो टीचिंग करते टाइम जो पीपल टीचर था उसका वीडियो टेप रिकॉर्ड होता था, फिर वो अपनी स्किल्स को खुद चेक करता था। यहाँ पे इंडियन मॉडल में इस चीज़ को चेंज कर दिया गया एंड statement and discussion methods were used in place of expensive aids like videotape recorders and CCTV, as well as यहाँ पे इंडियन मॉडल में क्या था कि जो स्टूडेंट्स नंबर था वो 5 से 10 था। एक्चुअल स्टूडेंट्स जो थे वो बीएड के स्टूडेंट्स रहते थे। और मैंने कहा ना एक लेसन प्लान का 6 मिनट मिलता है पढ़ाने के लिए और फिर रीप्लानिंग री वाला दोबारा से होता है। तो टोटल कंटेंट एक स्किल का एक ही टाइम पे उन्हें करना होता है। टोटल 5 to 6 मिनट का ही प्लान ये बनता है और इसको आप लोग भी आगे चल के यू आर गोइंग टू परफॉर्म इन योर लास्ट सेमेस्टर। आई होप माइक्रो टीचिंग जब भी आएगा। नेक्स्ट इज एडवांटेज ऑफ माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग की कुछ है, एक तो सबसे पहली चीज है इट इज वेरी सिंपल, लेस टाइम, वन स्किल परफेक्शन, एट अ टाइम, feedbacks, covers all shortcomings of pupil teacher. Fifth, individual difference of pupil teacher are considered. Evaluation is done objectively, मतलब आंकड़ों में किया जाता है, फीडबैक से नहीं। Trains more in less time. Reduce class complexities. और भी एडवांटेजेस हैं जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस पीपल टीचर में आ जाता है क्योंकि वो प्रैक्टिस इतनी बार कर चुके होते हैं। स्मॉल क्लास एट अ टाइम, सो वो इजीली लुक आफ्टर कर सकते हैं पूरी क्लास की, तो इसलिए उनकी ट्रेनिंग ज़्यादा बेहतर होती है। यूजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग, सो बहुत सारी यूजेस है। सबसे पहले तो कल्टिवेट्स प्रोफेशनल maturity. Second, people teacher are given
systematic, objective, specific, and immediate feedback. Okay, so they get immediate feedback. Next, behavioral change is getting easier after micro teaching. जो हमने objectives रखे हैं उन्हें ट्रेनिंग के, it makes training possible even when real school is not available for training. Okay, so these are the uses of micro teaching. I can give you one more. Teacher or pupil teacher invest more time for self study, क्योंकि उन्हें अपनी स्किल परफेक्शन करनी होती है तो दे स्टडी. But also there are limitations of micro teaching. First of all, much controlled and rigid. Next, distance real teaching, because ये माइक्रो टीचिंग जो होती है वो रियल इसमें तो होती नहीं है क्लासरूम में, सो इट रियल टीचिंग से थोड़ी सी डिफरेंट करती है. इट इज़ नॉट पॉसिबल टू यूज इंटीग्रेट ऑफ ऑल स्किल्स, क्योंकि उन्होंने एक एक स्किल बार बार प्रैक्टिस करी होती है तो कई बार इंटीग्रेशन करना भूल जाते हैं. इट इज नॉट पॉसिबल टू गिव फीडबैक immediately. So these are the limitations of micro teaching. Thanks for watching Gyandhara. Please like, share and subscribe.